Hello students, this is Suvendu, your physics mentor, and welcome to our physics channel. That is Suvendu Physics. And in this session, we will discuss about our scalar vector chapter. This is our part 2 or session 2 of this chapter, and this is under basic mathematics of class 11 physics that is available in both CBSE and CHSE content. Okay, so without any delay, let's start our session. Yes. So up to in our part 1, what we have already discussed? We have already discussed about basic idea regarding vector, how to represent the vector, what are the different types of representation of vector, vector को represent करिवार different ways. कौन ways को आइला? There are 3 types of representation of a vector. That is our symbolic representation, mathematical representation. Third one is geometrical representation. So we all are very much acquainted with all this content. So without any delay, in this session we will discuss different types of vectors. So this session is very important for all of you. Now see. So what is same order, different order? That part already we have covered. So starting from types of vectors. So first one is our parallel vector. What do you mean by parallel vector? Now see, it means vectors which are similarly directed. Similarly directed and their magnitude may or may not be same, and their magnitude may or may not be same, and they must have same unit. Another is they must have same unit. They must have same unit. Now focus upon the diagram. In diagrammatic part, you will understand this content in a very fruitful manner. So this is suppose our vector A vector, and let us consider another vector B vector. Here I am going to consider yes. So these are two vectors. Now see another example. This is suppose our A vector, and this is our B vector. So what you are observing in this content, now see, this is A vector and this one is B vector. This is in this case A vector and this one is B vector. So importantly, they may have their magnitude may or may not be same. So now see, both are having same direction. If you will consider this is your positive x-axis, then vector A is directed along positive x-axis and vector B also directed along positive x-axis in both the cases. This is suppose case 1, case 2. So what you are observing in this case, angle theta between two vectors is 0 degree. Here also angle theta between two vectors is 0 degree. Second thing, magnitude of A vector is equals to magnitude of B vector in this case. But in this case, magnitude of A vector is not equal to magnitude of B vector. I think it is clear. Magnitude, length of the arrow is directly proportional to the magnitude of that vector quantity. So as per that condition, we can write this way. And both are having same direction. So direction of A vector, that is can be written A cap is equal to B cap in this case. And here also A cap is equal to B cap. अभी हमको पता चल रहा है vectors which are similarly directed. That means in both the examples देखो vectors having same direction. So they are treated as parallel vectors. And parallel vector के बाद we will discuss. Is it clear to all of you? तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल जो थीटा होगा दैट इज 0 डिग्री. दैट शुड बी 0 डिग्री. एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री. ओके. सो नेक्स्ट कम टू आवर सेकंड वेक्टर दैट इज आवर इक्वल वेक्टर्स. इन दिस केस क्या दिखा देखा वेक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टेड in
same direction and their and their magnitudes are equal. दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या दिखा देगा, हमको बराबर ही दिखा देगा. थीटा वेक्टर रो मैग्नीट्यूड हमें पाइबा सेम मैग्नीट्यूड एंड दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन. नाउ as per our figure, this is your a vector, one is b vector. Now in this case they are treated as equal vectors. That means a vector magnitude is equal to b vector magnitude and a vector direction is equal to direction of b vector, and theta between them is angle theta is equal to also 0 degree. Okay, in previous class we have discussed about how to calculate the angle between two vectors, that is the smaller angle between two vectors when they are joined tail to tail. Okay, fix this content in mind, or head to head join bhi hoga. So we can say all equal vectors are parallel vectors, but all parallel vectors are not equal vectors. So we can write this point, all equal vectors, start point, all equal vectors are parallel vectors, but converse is not true. I think this is clear to all of you. So this is about our parallel vector and equal vector. Next come to our anti-parallel vector. Now next vector is our anti-parallel. तो इसमें क्या दिखा देगा बोलो, vectors which are directed in opposite direction and their magnitude may or may not be equal. Clear? They must have same unit. I think it is clear. अभी डायग्राम के ऊपर फोकस करो. तो डायग्राम को फोकस करने के बाद तुमको अच्छे से पता चल जाएगा एक्चुअली व्हाट आई एम गोइंग टू से. I think the diagram is clearly visible to all of you. So if you will observe the diagram, if this is considered, this is as a vector, this is as b vector, and this is your a vector, this is b vector. What we can write in this case? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, so a vector magnitude is equal to b vector magnitude. Second thing, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, that means a cap is equals to negative of b cap. This minus sign represents negative direction. और क्या चीज दिखाई दे रहा है, एंगल थीटा. थीटा कैसे सर्च करेंगे हम लोग, a vector can be shifted parallel to itself. Now see the example, this is suppose a vector, ये b vector को parallel शिफ्ट करके ऐसे अटैच करो, अभी जाकर टेल टू टेल कनेक्शन हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री. I think it is clear. So theta is equal to 180 degree in this case. Next is in second part, magnitude of a vector is not equal to magnitude of b vector, but a cap is equal to minus b cap and theta between them is equal to 180 degree. So both are included in case of anti-parallel vector or anti-parallel vector. Vectors which are directed in opposite direction and their magnitude may or may not be equal. They must have same unit, and the angle between anti-parallel vectors, angle is 180 degree. Angle between them is 180 degree. So this is about our anti-parallel vectors. Anti-parallel vector के बाद we will discuss
नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर. What is the other name of opposite vector? We can write negative vector or negative vectors. I think the heading is visible to all of you. इसमें क्या होगा? क्या स्पेशल केस? एंटी पैरेलल का स्पेशल केस. Vectors are directed in opposite directions, but they are having same unit and same magnitude. Vectors which are directed in opposite direction, vectors which are directed in opposite directions with same magnitude, with same magnitude is called opposite vector or negative vector. Okay. Then in diagrammatic part we can say or we can represent this thing. दिखाई दे रहा है, देखो. This is one of the vector is our A vector and this is B vector. So from the diagram, what you are observing, A vector magnitude is equal to B vector magnitude. A vector magnitude is equal to B vector magnitude. And the direction of A vector is equal to negative or opposite of direction of B vector. Theta between them कितना होगा? Theta equal to 180 degree. I think this is clear. We can say all opposite vectors are anti-parallel vectors, but converse is not true. So in note point we can mention all opposite vectors, all opposite vectors are anti-parallel vectors, are anti-parallel vectors, but converse is not true. That means all anti-parallel vectors are opposite vector. That is wrong concept. तो इसमें पता चल गया एक्चुअली इन केस ऑफ एंटी पैरेलल बोलो या अपोजिट बोलो, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दैट इज 180 डिग्री. इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट मींस कितना होगा? 0 डिग्री होगा. तो ये चार वेक्टर के बाद आफ्टर दिस फोर वेक्टर्स, ये फोर वेक्टर्स के बाद व्हाट वी विल डिस्कस? Now see, this is our collinear vector. Collinear vectors. What do you mean by collinear vectors? Co means same and linear means line. So vectors having common line of action are called collinear vectors. तो एक मजेदार चीज इसमें है, अवेलेबल है, देखो क्या है. तो vectors having common line of action, common line action are called collinear vectors, are called collinear vectors. इसका डायग्राम हम लोग सोचेंगे क्या होगा. देखो सपोज ये एक वेक्टर दे रखा है तुमको, सपोज वन वेक्टर and this is suppose your another vector. दिखाई दिया सबको? Yes. And in next diagram we'll consider this diagram. ऑब्जर्व करो,
देखो ये दोनों पिक्चर पे इन लोगों का लाइन ऑफ एक्शन, दैट मीन्स दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंड लेट अस कंसीडर दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन अभी दिखाया जा रहा है। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड जो भी होना, मैग्नीट्यूड बराबर भी होगा, बराबर भी नहीं होगा। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन आर कोलिनियर वेक्टर्स। मैं पूछूंगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स, आंसर क्या होगा? एंगल में भी 0 डिग्री होगा, नहीं तो 180 डिग्री भी हो सकता है। सो एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स, एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स में भी 0 डिग्री और 180 डिग्री। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर्स। मैं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, 3 4 जो भी हो सकता है, ओके। तो दिस इज अबाउट आवर कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट कम टू next vector is our co-initial vector. Co-initial, co means same, initial means starting point. Vectors having common initial point or common starting point are called co-initial vectors. So vectors having common initial point or starting point are called co-initial vectors. In diagram, if you want to understand, you may think about this type of diagram. These are the vectors. Let us think. This is our A vector, this is B vector, this is C vector, this is D vector. They are having common tail point. So all these vectors are regarded as co-initial vectors. This is a very interesting and very easy concept. इसका नाम पे उसका content available है. What is co-initial vector? Next come to our concurrent vectors. Next is our co-planar vectors के पास चलो. Co-planar. Co means same, planar means plane. Vectors flying or vectors resides on the same plane, they are said to be co-planar vectors. Vectors which are lying on a same plane, are called co-planar vectors. So if you want to draw the diagram, you may think about this diagram. Let us think this is our plane. And in this plane, number of vectors are available as per the diagram. Number of vectors are available. Now check it. Number of vectors are available as per the diagram. All the vectors are present in one plane. That means they are said to be coplanar. Let us think. This is our plane surface. ये क्या हो गया हमारा? This is our plane surface. दिखाई दे रहा है? ये प्लेन सरफेस के ऊपर 4 वेक्टर्स अवेलेबल. This is A vector, B vector, and let us see vector. This is D vector. So all are lying in the same plane. That means they are said to be coplanar vector. Ready? I think it is clear to all of you. Very good. So vectors which are lying on a
प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। सिंगल प्लेन पे अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आवर concurrent वेक्टर्स। इसमें क्या लिखना चाहिए? वेक्टर्स which are intersecting at a common point or their line of action intersect at a common point। देखो उस डायग्राम के बाद पता चल जाएगा। वेक्टर्स which are intersecting at a common point or whose line of action intersect at a common point, are called concurrent vectors, For example, if you want to understand with proper diagram, then you may think about this diagram। अभी जो डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो ऑब्जर्व करो। Observe this diagram properly so that you can understand it in a very simple format। There are three vectors as shown in the figure। And second vector देखो मैं कर रहा हूँ। second diagram को ऑब्जर्व करिबा। second diagram कौन कहला सपोज? एठी हम जे देखिबा याकु जे हम इंटरसेक्ट करिबा, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन, एटा ए वेक्टर रो ग्रीन कलर वेक्टर लाइन ऑफ एक्शन। यस, and here this white color vector line of action is this one। This is the line of action of this white color vector, and this red color vector line of action is this one। Ready? इसमें a vector, b vector, and this is your a vector, b vector। तो वेक्टर्स का देखो वो लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट, और वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमन पॉइंट, they are termed as concurrent vectors। I think this content is clear to all of you। So regarding all these things, it is clear। So in this case we can also write or vectors which pass through a common point, vectors which pass through a common point are called concurrent vectors। You can write this too, are called concurrent vectors। देखो कितना आसान हो गया। Regarding concurrent vectors, everything is clear to all of you। नेक्स्ट वेक्टर के पास चलो। नेक्स्ट कौन सा वेक्टर अवेलेबल है? देखो कॉन्करेंट के बाद एक्सियल वेक्टर्स। वेरी गुड, ये एक न्यू कंटेंट एक्चुअली। वेक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टेड along the axis of rotation। वेक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टेड along the axis of rotation। जितने लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, धीरे धीरे वो एक्सियल वेक्टर का भी एग्जांपल हमारे सामने आ जाएगा हमारे कंटेंट के अंदर, तभी जाकर समझ पाओगे। हमें आपको चैप्टर प्रोसीड कले बहुत भल से एक्सियल वेक्टर एग्जांपल को बहुत भल से फील करते। Clear? In case of circular motion, you can understand this content in a very systematic and easy manner। But right now, I am going to explain the axial vector। So axial vector means vector which is directed along the axis of rotation called axial vector, which is directed along the axis of rotation and also perpendicular to plane of rotation called
axial vectors. I think it's clear all of you. देखो स्टेटमेंट तो हो गया, अभी डायग्राम के ऊपर फोकस। सपोज एक क्या है, रोटेट, एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है यहाँ पे, पार्टिकल इज मूविंग, क्लियर। तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका सेंटर को पास करके प्लेन ऑफ रोटेशन पता चल रहा है तुमको, व्हिच वन इज द प्लेन ऑफ रोटेशन। देखो इसमें मैं कवर कर दूंगा, तो जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर प्लेन, इस रेड कलर प्लेन को हम लोग मानेंगे प्लेन ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन and that passes through the that passes through the curve and that passes through the center. So our figure is our of rotation. देखो कितना आसान हो गया, one is axis of rotation. अभी ये जो पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, अभी इट इज मूविंग, नाउ इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो एक्सियल वेक्टर क्या होगा, ये राइट हैंड को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 4 फिंगर पे से कर्ल करने से थंब इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर इज एक्टिंग along upward direction, okay, when body is moving anti-clockwise. For anti-clockwise rotation it is upward, that is it is away from the plane of rotation. हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो देखोगे, यहीं से ऑब्जर्व करने से तुम लोगों को पता चल जाएगा इट इज अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करने से तो डाउन, क्लियर। तो फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन कैन यू ड्रॉ द डायग्राम। अभी सेम डायग्राम को मैं दिखा रहा हूँ, देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, डायग्राम अभी दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। हो गया, और यहाँ पे फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन होने से पेंटिंग इन इज क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको भी हम लोग करेक्ट कर देंगे, इज क्लॉकवाइज रोटेशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इट इज अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ रोटेशन, यहीं से ऑब्जर्व करेंगे करने से, दिस इज टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ रोटेशन, क्लियर। क्या एग्जांपल क्या होगा, क्या एग्जांपल होगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है, इतना ही आता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन चैप्टर पे we will discuss that content in detail manner. Now this is about our axial vector. Axial vector के बाद after this content we will discuss unit vector. So it is one of the finest and important topic. Now try to understand it in a very systematic. Unit vector का मतलब क्या है, vector whose magnitude is 1, vector whose magnitude is 1, that is called unit vector. मुझे अभी मैं एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ट्राई टू लिसन इट प्रॉपर्ली। नाउ कंसीडर 3 एक्सिस, this is your x axis suppose, and let us think this one is your y axis and this is your z axis. ये सबको पता है एक्चुअली, this is x axis the origin, this is y axis, this is z, clear। so origins को रेफरेंस पॉइंट मानकर if you will move by considering the origin as a reference point, ये सपोज 1 यूनिट डिस्टेंस, इसको मान लो 1 यूनिट डिस्टेंस, भी दिखाई दे रहा है सबको। तो ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस, हम लोग ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस मूव कर रहे हैं अभी, कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर भी ले पाओगे, नहीं तो 1 सेंटीमीटर भी कंसीडर करो एज पर योर कन्वीनियंस। तो फॉर 1 यूनिट डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन,
1 यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट मीन्स मैग्नीट्यूड इज 1 एंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को हम लोग लिखेंगे प्लस आई कैप। प्लस आई कैप का मीनिंग क्या है? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। तुम लोग आई कैप कंसीडर करोगे तो आई कैप का मीनिंग क्या हो गया है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसको सिंपली यू कैन रिप्रेजेंट इट एज आई कैप। तो आई कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे क्या लिखोगे? माइनस आई कैप। तो मैं यहीं से यहाँ तक देखो, ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट तक जो भी डायरेक्शन है ना, ओरिजिन से लेकर यहीं पर तक सेम टू सेम। तो डायरेक्शन तो बराबर आ रहा है। सपोज मु कहिबी ये गोटे स्ट्रेट पाथ अछि एंड एटी तुम फ्रेंड अछि आउ एटी से जणକୁ देखा କରିବାକୁ आसु। तुमको कहला, तुम गोटे पिला पचारला, मो सांग पचारला ए से जो अंकल को घरटा कोठी, यार माने नुह तुम पूरा घर जाए छाड़ी आनिब। जदि रास्ता स्ट्रेट अच्छी तुम कौन कह ये गोटे सपोज गोटे टेम्पल थुआ और गोटे टेम्पल अच्छी टेम्पल टेम्पल तुम कौच जो टेम्पल देखा तुमको यस टेम्पल सीधारे पलैब 1 किलोमीटर स्ट्रेट वे तुम पहुंच जीव तुम डेस्टिनेशन। वी आर सजेस्टिंग लाइक दिस टू आवर फ्रेंड्स और टू अननोन पर्सन। तो एते बड़ लार्ज डिस्टेंस कवर करके डेस्टिनेशन रे पहुंचेबा, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग। क्लियर? बट डायरेक्शन को ऑब्वियसली हमें इंडिकेट करके हमें कहि दउ जे एई डायरेक्शन रे हम सीधा पळाओ अप टू 1 किलोमीटर यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। यस, आई थिंक इट इज क्लियर। सो यूनिट वेक्टर रो काम कोन जानि पाइल? सेमति हम कहिबी यूनिट वेक्टर अलोंग if a body moves 1 unit distance से कवर कला वो डायरेक्शन रे along positive y direction, so what you have to write 1 j cap 1 j cap or simply write j cap and unit vector along positive z direction, unit vector along positive z direction we can say 1 k cap small k or small k. Now we can say j cap means unit vector along positive y direction and k cap means unit vector। देखो इसके पीछे कौन सा नंबर अवेलेबल है? 1। तो यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव z डायरेक्शन, नेगेटिव होने से माइनस आई माइनस जे माइनस। Now we can observe I cap, j cap, k cap, all these unit vectors are perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other. Clear? ये एंगल 90 डिग्री मैं बोला था तुमको, देखो ये वाला चीज एंगल 90, इसके बीच में एंगल 90, इसके बीच में एंगल। ओके, ये जो जेड एक्सिस में दिखा रहा हूँ ये तुम्हारे फेस के तरफ, टुवर्ड्स योर फेस। रेडी? So vector whose magnitude is a1, that is your unit vector. Let us consider, let a is a unit, sorry, let a is a vector. So how we can represent unit vector along the direction of a vector? A vector or direction हमें unit vector को केमती represent करेगा? So unit vector, now listen the language, unit vector along the direction of a vector, along the direction of a vector, that is equal to a cap. Because of this reason in mathematical representation we have written what is that content? A vector is equal to a vector mod cap. Clear? So this is unit vector along the direction of a vector. So as I cap, j cap, k cap are the unit vectors which are perpendicular to each other, so they are termed as orthogonal unit vectors. तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमको? देखो, so you have to write one thing, yes, बस यहीं पे रखना दोस्तों, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखना चाहिए आज आई कैप, जे कैप and k cap are mutually perpendicular to each other, are
मैं यहाँ पे स्क्रीन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वेदर इट इज गोइंग प्रॉपर्ली और नॉट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so they are called orthogonal unit vector, orthogonal unit vector. Okay, so this is about our unit vector. इतना आसान हो गया देखो। तो आई कैप जे कैप के कैप कंटेंट को ये वेक्टर के चैप्टर में हम लोग बार बार यूज करें, आगे जाकर ये चीज बहुत हेल्प करेगा हम। okay? तो ये चीज दिमाग में फिक्स रखो जैसे कि छूट ना जाए। देन यूनिट वेक्टर के बाद नॉल वेक्टर, ये भी एक इंटरेस्टिंग। नॉल वेक्टर क्या है, व्हाट मीन बाय नॉल वेक्टर, उस मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो नॉल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। तो नॉल वेक्टर का डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इट हैज नो एनी फिक्स डायरेक्शन, यू कैन टेक आर्बिट्ररी डायरेक्शन फॉर नॉल वेक्टर, आर्बिट्ररी। तो ऐसे क्यों हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट वेट। नॉल वेक्टर, सो वी कैन राइट वेक्टर whose magnitude is zero. It has no fixed direction. It has no fixed direction. But it has, next point क्या है, it has arbitrary direction. It has arbitrary direction. समझ में आया तुमको? तो नॉल वेक्टर को हम लोग कैसे एग्जाम्पल के दौरान हम लोग समझ पाएंगे, केमती हम ताको एग्जाम्पल ले बुझिबा। यू जस्ट सी गोटे बॉडी सपोज रेस्ट अछि, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी, वी कैन से जीरो। तो क्लास रे हम ताको जीरो ही कहउले, और दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ पा रहे हो? व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट एट ओरिजिन, for a stationary body at origin, its displacement vector is zero vector. तो जीरो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करें हम लोग, जीरो वेक्टर, और इट इज कॉल्ड नॉल वेक्टर और एम्प्टी वेक्टर। नॉल वेक्टर उसका नाम क्या है, नॉल वेक्टर, और जीरो वेक्टर, और क्या है, एम्प्टी वेक्टर, और एम्प्टी वेक्टर। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। तो एग्जाम्पल के दौरान हम लोग क्या लिखना चाहिए, एग्जाम्पल वी कैन से फॉर ए स्टेशनरी बॉडी at rest, for a stationary body at origin its displacement vector after del t time interval, is zero vector। आसान लगा तुमको? वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट इज a vector quantity, but if you will say zero, that means you are considering the magnitude only. Okay, now see, when a ball is thrown in upward direction and when it returns back to the thrower's hand, तो डिस्टेंस कवर सपोज h हाइट ऊपर चला गया, तो h हाइट भी नीचे ही आ जाएगा। तो कितना डिस्टेंस हुआ, 2h। लेकिन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, so when it returns back to the thrower's hand, the displacement vector is zero vector. For a ball, when a ball is thrown in upward direction, and then it returns back to the thrower's hand, then its displacement is zero vector. वेरी गुड। अच्छा, अभी मुझे बोलो,
for a body moving with uniform velocity. Uniform velocity means initial velocity will be equal to final velocity. So when initial velocity will be equal to final velocity, what will be the acceleration? Acceleration formula, we know a vector is equal to v vector minus u vector. Third example देखो, we know a vector is equal to v vector minus u vector by t, class 9 content. So for uniform motion, for uniform motion, for uniform motion v vector is equal to u vector. तो ऐसे होने से acceleration vector कितना मिलेगा? 0 vector. So now we can say for a body moving with uniform velocity, okay, its acceleration is 0 vector. For a body moving with uniform velocity, its acceleration is 0 vector. Its acceleration is 0 vector. I think this 0 vector content is clear to all of you. Its acceleration is 0 vector. So now see 0 vector के साथ वही हम लोग, मैं बोलूंगा अभी, if a vector plus b vector is equal to a vector minus b vector. रेडी? a वेक्टर प्लस b वेक्टर का आंसर जितना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का भी आंसर सेम टू सेम होने से देन क्या लिखोगे? देन b वेक्टर मस्ट बी 0 वेक्टर. b वेक्टर मस्ट बी 0 वेक्टर, ये पक्का हो. देन b वेक्टर मस्ट बी 0 वेक्टर. इफ आई विल से m into 0 वेक्टर, आंसर क्या होगा? 0 वेक्टर ही मिलेगा. यस, वेयर m इज ए ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग पे इन केस ऑफ नल वेक्टर और 0 वेक्टर. आई थिंक दिस पोर्शन इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. रेडी? ऐसे नल वेक्टर का बहुत सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके हम लोग आराम से लिख पाओगे. क्लियर? तो माय क्वेश्चन इज व्हेन ए वेक्टर डॉट, हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन समझ पाओगे. व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो व्हिच वेक्टर इज आवर 0 वेक्टर? इसको याद रखो, कॉपी में मेंशन करो. जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग शुरू करेंगे टाइम पे हम लोग इसको फिर से डिस्कशन कर लेंगे. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वेरी. इसके बाद हमारा कौन सा वेक्टर अवेलेबल है? नल वेक्टर के बाद कितना टाइम हुआ? नल वेक्टर के बाद फिक्स्ड वेक्टर. वेरी गुड. फिक्स्ड वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर whose initial point is fixed. Vector whose initial point is fixed called fixed vector. It is called fixed vector. इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? पोजीशन वेक्टर. Now we will study in detail regarding position vector. What do you mean by position vector of a particle? Always remember, if you will draw 3 axes. Now let us consider the 3 axes as per the figure. X axis, this is your y axis, and third one is our z axis. Think, got it? So this is x, this is y axis, z axis. ये क्या है हमारा? origin. Suppose any particle p is present and p का कोऑर्डिनेट क्या है? x, समझ पा रहे हो? So what is the position vector of point p? What we have to do? Position vector of a particle. Okay, always remember the vector starts from origin to that point. क्या दिया तुमको? Origin to that point. So as per my figure, yes, so this OP vector is the position vector of point P, and it is denoted by the letter R. R vector is equal to
So in figure r vector is equal to op vector is equal to position vector of point. This is the position vector of p whose coordinate is whose coordinates are Cartesian coordinates are x comma. This is the position vector of point p. Now how can we write the position vector? ओके इसका एक सिंपल फॉर्मेट में बोल रहा हूँ देखो, तो यहीं से ये जो x कोऑर्डिनेट दे रहा है एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, देखो x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है एंड y कोऑर्डिनेट का मीनिंग भी क्या है। x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, y कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है। देखो x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये है तुम्हारा x, परफेक्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस ये वाला डिस्टेंस ये क्या है y, ये y होगा, नहीं तो ये इसको भी y मान लो। लेकिन ये जो डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं कौन सा डायरेक्शन में एक्चुअली कवर कर रहे हैं, वो डायरेक्शन में कवर करते हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन, वी कैन राइट i क्या बन रहेला, देन दिस इज टेकन along positive y direction, ठीक है, दिस इज टेकन along positive x axis प्लस i क्या, पॉजिटिव y एक्सिस प्लस j क्या, तो x i क्या एंड y j क्या, तो इसको मैं वेक्टर के हिसाब से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं देखो बस, वेरी गुड, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, परफेक्ट। तो इसमें देखो और एक चीज, ये r वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, लेट इट बी थीटा, आगे जाकर हेल्प करेगा। तो इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है एक्चुअली, देखो x i क्या वेक्टर ऐसा ही है एंड y j क्या वेक्टर कैसे अवेलेबल है, दिस इज योर y j वेक्टर, दिस वन इज y j वेक्टर, दिस इज y j क्या, x i क्या y j क्या। नाउ टेल these two vectors are in which order, opposite order or same order, they are in same order because ये है तुम्हारा head of the right vector and this is the tail of the green color vector, तो head tail connection दिखाई देगा, तो बोल रहा था तुमको, बोला था head tail connection means this is same order। तो when two vectors are in same order then ये दोनों को बेस करके एक ट्रायंगल क्रिएट करो, जो कि जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट शुड बी इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखो अभी तुमको दिखाई दे रहा है ये थर्ड साइड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर देखो एक्स आई क्या वेक्टर के साथ ऑपोजिट ऑर्डर पे है, वाई जे क्या के साथ भी ऑपोजिट ऑर्डर, बिकॉज हेड हेड कनेक्शन टेल टेल कनेक्शन। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज अवेलेबल इन आवर सिलेबस, so all of you remember as per the triangle law of vector addition, what is that content, as per the triangle law of vector addition, if two vectors are in same order then third side of the triangle taken in opposite order gives their resultant vector। नेक्स्ट फेज में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे विथ बेस्ट न्यूमेरिकल्स। तो x i कैप एंड y j कैप देयर इन सेम ऑर्डर, ये दोनों का एडिशन क्या होगा, r वेक्टर होगा, तो इसमें r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, का रीजन पता चल गया तुमको, बिकॉज दे आर इन सेम ऑर्डर एंड व्हिच रूल वी आर अप्लाइंग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, परफेक्ट, इज दैट क्लियर, वेरी गुड। ऑलवेज थिंक प्रॉपर्ली, इफ दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, मैं एक राइट एंगल, ये जो राइट एंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, तो मैं फिर से दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक राइट एंगल के हिसाब से, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से मैं शो कर रहा हूं, लेंथ वाइज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आर, दिस इज वाई एंड दिस इज क्लियर। तो एज पर द पाइथागोरस थ्योरम आर इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, but what is r actually, r is the magnitude of r vector, fix this point in mind, r is the magnitude of r vector, so instead of this r we can write r vector magnitude, आंसर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी देखो ये जो r वेक्टर था ना, इसका आंसर क्या लिख रहे हैं हम लोग, x i क्या प्लस y j क्या, कार्टेशियन फॉर्मेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट में ये होगा तुम्हारा, वेरी गुड। तो इसको मिलने के बाद, ये मिलने के बाद व्हाट वी हैव टू फोकस, r वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, इफ द एक्सप्रेशन इज कमिंग लाइक दिस, सो व्हिच इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर
that is r, that will be equal to x square plus y square. Or I think it is clear to all of you. It is very clear to all of you. Very good. तो इसको भी बॉक्स में प्लेस कर दो, तो भी हम लोग बॉक्स में प्लेस। ये एक चीज हो गया। इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर वी हैव स्टडीड a vector can be represented as by a vector mod cap. A vector is equal to a vector mod a cap. Very good. Similarly r vector can be represented as, or r vector can be represented by, can be written as r vector mod r cap. Perfect. So what is the meaning of r cap? Unit vector along the direction of r vector. तो क्या होगा, r vector by r vector मैग्नीट्यूड। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से r कैप क्या होगा, r वेक्टर क्या मिल रहा था हमको, x i कैप प्लस, दिखाई दे रहा है, प्लस y j कैप डिवाइडेड बाय r वेक्टर मैग्नीट्यूड इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर। दिस इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, यूनिट वेक्टर along the direction of r वेक्टर। देखो ये पेज में हम लोग जितना भी कंटेंट डिस्कशन किए हैं, all these are very important for you and for your upcoming future in physics. So what is the meaning of position vector, ये पता चल गया। Position vector means location of a particle, location of a body with respect to origin to that point, that should be the direction। वो पॉइंट से लेकर origin ऐसे कंसीडर करने से रॉन्ग हो जाएगा। Position vector always starting from the origin to that point का डायरेक्शन। तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये उसका वेक्टर फॉर्मेट, ये उसका मैग्नीट्यूड एंड ये उसका डायरेक्शन। दिस इज अबाउट आवर फिक्स्ड वेक्टर। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं वही आर वेक्टर को हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से अभी रिप्रेजेंट किए हैं। नाउ आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ इफ आई विल आस्क हाउ टू रिप्रेजेंट द आर वेक्टर in terms of r and theta, r vector means position vector, so position vector का मैग्नीट्यूड एंड जो पोजीशन वेक्टर x एक्सिस के साथ जितना एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा एंगल, so r and theta फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी कंटेंट हम लोग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। तो पोलर वेक्टर, इसके बाद हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं अभी, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट, polar vector। Okay, with full of patience, now all of you listen। Okay, now see, this is your x axis था हमारा, ये था हमारा x axis and this one is our y axis। ऐसे मान लेते हम लोग y axis, ये था, ये भगवान, ये क्या है देखो z axis। क्लियर, x y और हम लोग पॉइंट कंसीडर किए थे, लेट दिस इज पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या था x, y का पोजीशन वेक्टर क्या है रे, वो P वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, वो P वेक्टर, वो पॉइंट क्या है देखो, दिस इज O P। ये एंगल क्या था थीटा, ये वेक्टर क्या था r वेक्टर। वेरी गुड। नाउ टेल, इसे परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद व्हाट वी कैन इन्फर, व्हाट वी कैन सी। नाउ सी दिस कंटेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा x, जाएगा y, ये था ना बस। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल अभी तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे मैं तुमको पूछ रहा हूँ व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा मींस फ्रंट फेसिंग साइड y डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड क्या है r। r वेक्टर नहीं, r ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्केलर, दिस इज नॉट वेक्टर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y कैन बी रिटन एज r sin थीटा। देखो y का रिप्रेजेंटेशन पता लग गया। ऑल्सो व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, x by r। So x can be written as r cos theta। Ready? So in previous slide we have written r vector equal to कितना लिखे थे हम लोग, x I cap plus y j cap। Perfect। Now in terms of r and theta, in terms of r and theta,
in terms of r and theta. In terms of r and theta, so r vector will be equal to r cos theta cap plus r sin theta फाई का वैल्यू। तो ये है तुम्हारा पोलर फॉर्म, इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। Here vector is represented in terms of r and theta, in terms of r and theta. I think this is very clear to all of you. That clear to all of you? पोलर वेक्टर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, देखो क्या होगा, आई कैप के पास जो भी लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के पास जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर का रूट ओवर, तो यू विल गेट आर। तो आर cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर sin थीटा का होल स्क्वायर रूट ओवर, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर, आर स्क्वायर कॉमन ले आने से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल रूट ओवर देने से 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर का रूट ओवर आ रहेंगे। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सी वन थिंग, if I will ask, if the vector is, suppose एक क्वेश्चन देखो, if a vector equal to 2i cap plus 3j cap, और ऐसे लिखो 3i cap plus 4j cap, so find a vector magnitude and similarly if I will say that b vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus 5k cap. Ready? So find b vector magnitude and unit vector along the direction of। तो इसका आंसर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे ए वेक्टर मॉड क्या करना चाहिए, आई कैप के पास जो भी लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के पास जो भी लिखा है उसका स्क्वायर रूट ओवर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर क्या है 5 स्क्वायर रूट ओवर, दैट इज 5। एंड व्हाट इज ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर मॉड, लिखा था ना मैंने, ए कैप इक्वल टू वेक्टर बाय वेक्टर मॉड। तो वेक्टर क्या है इसमें 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, we can write 3/5 i cap plus 4/5 आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन अभी दिखाई दिया तुमको, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का जो भी कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप का जो भी कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कैप का जो भी कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस -5 का स्क्वायर। क्लियर? सो 4 प्लस 9 प्लस 25 का कितना हुआ 25 प्लस 4 that is our 29 plus 9 that is 38 root over। रेडी? तो इसमें बी वेक्टर फिर बी क्या होगा, बी वेक्टर बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर क्या होगा इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय √38 and you can write like this also, no problem। तो in this case हमको ये पता चल रहा है एक्चुअली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर, हम लोग इसमें प्लेन के ऊपर इसका कोऑर्डिनेट कितना कोऑर्डिनेट में लिया हम x एंड y। तो इन केस ऑफ 3D ये हो गया इन 2D, इन केस ऑफ 3D क्या होगा, इन केस ऑफ 3D देखो, इन केस ऑफ 3D हमारा जो पोजीशन वेक्टर उसका आंसर क्या होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये फिगर पे in 3D case it will be in 3D r vector will be equal to xi cap plus yj cap plus z। तो इसी हिसाब से r वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा, r वेक्टर मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट ओवर। आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट r कैप, r वेक्टर बाय r वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये था आज का सेशन पे हम लोग जो भी एक्चुअली
consider किया है ना. This is about types of vectors. I think it is very very clear to all of you. It is fully clear to all of you. Now see one thing. Question क्या दे रहा है देखो. Question is in the figure. Now say A vector and C vector are parallel. A vector and C vector both are parallel. That is true. They are same direction, directed in same direction. A vector and B vector and B vector and C vector are anti-parallel. Okay. Wait for 1 minute. Okay. A vector and B vector. देखो A vector B vector oppositely directed, so anti-parallel. B vector and C vector, yes, they are oppositely directed. That is anti-parallel. That is also correct. C vector and D vector are co-initial vectors. C vector and D vector are co-initial. Yes, they are having common tail point. Co-initial. And A vector, B vector, C vector, D vector are coplanar. That is also they are coplanar. Yes, I think it is clear to all of you. Yes. So this is all about our today's lecture. हो गया ABCD are coplanar. एक ही प्लेन पे ही है. C vector and D vector co-initial on initial point. So this is about our part 2 of our chapter. But scalars and vectors. So thank you everyone. This is about our part number 2, and part 3 will discuss about vector addition. Okay, that is fully important for us. Thank you and have a nice day. Stay tuned for next update. Please like, share and subscribe our channel. Okay.